अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज क्रिकेट क्लिनिक वंस अगेन। आप सबको खुशामदीद। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं मुदस्सिर और आसिफ एंड माई सेल्फ साइम। As we stand, the Asia Cup has just finished, and congratulations to India. India has won the Asia Cup. Unfortunately for us, the Asia Cup did not go well, and that's a big understatement, because जो कुछ गलत हो सकता था वो हुआ। बट अगेन, इस एपिसोड का मकसद है ओवरऑल एशिया कप को एनालाइज करना, और बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं। आई मीन मेन चीज है कि हम एक क्रिटिकल और एक कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं, बिकॉज द बिगर बैटल ऑफ कोर्स इज द वर्ल्ड कप। सो अगर इन गलतियों से हम सबक सीख लें, हम जो हमारी स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई, टैक्टिकल गलतियां हुई, टीम कॉम्पोजिशन, कैप्टनसी रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि होपफुली हमारे मुताबिक जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम वो करते हैं, तो वी आर स्टिल एज पाकिस्तानी फैन होपफुल दैट द वर्ल्ड कप वुड गो वेल। तो मैं ओपन अप करता हूँ। आसिफ, क्या आप ओवरऑल किस तरह समराइज करेंगे? वी वुड नॉट वांट टू गो सॉर्ट ऑफ गेम बाय गेम, बट बिग पिक्चर आपकी क्या टेक अवेज हैं इस एशिया कप के पाकिस्तान के लिए? Assalamu alaikum. Yes, I'm going to start again with my perspective. It's very faded, like our hopes and dreams are right now for the World Cup. But a few things, again, you can go into a lot of detail. I'm not going to do that. One of the things, we've some of our weaknesses have been exposed. We know our pace bowling was good. 66 for 4 was a fun time, that one time for us. दो चीज़ जो I want to bring up. One is catching. I've been complimenting our catching throughout, but it has to be, you cannot be 90% or 95%, because that last 5% is when it matters the most. And you see in the match against India, when they destroyed us, there was a half chance that Shaheen Afridi could have taken first ball. He didn't. There's that catch that went through the slips where the keeper and Iftikhar were staring at it. You have to take all of your chances if you want to run the World Cup. So, 100% attention all the time. But I want to bring up something that was the biggest disappointment to me that people are not talking about. It is the mental fragility of our team and our management, our everyone really, and there's something that really bothered me a lot. And there was a time when we were 60, India was 66 for 4, and then Shadab and Nawaz came in, India recovered. Ravi Shastri and I think it was Matthew Hayden who came in and immediately tore into us, saying Pakistan has 3 great fast bowlers, but after that they have nothing. And nobody said anything. Nobody pushed back. We were the number 1 team going into this, and we got there for a reason. Shadab and Nawaz have been pretty good, but they did not do well in this match. But there's a reason that you reach number 1, and to have other people come and define us while we do not stand up for ourselves or have no sense of pride to talk about what we are and how we got there, and instead we just reacted and we're pointing fingers at each other. It's very interesting that they immediately said that they need to have a fast bowling all-rounder in, and we complied. Shastri was essentially trying to plant an idea, a seed of doubt in our minds. The words barely came out of his mouth, and Fahim Ashraf was in the next match. If this movie was Inception, it would have been over in 30 seconds, because that's how quickly we succumbed to what he said. It as the Emperor Commodus in the great movie Gladiator said, it vexes me, and I'm terribly vexed. I just didn't like how we folded over and essentially did not push back at all when, we should define ourselves. We should not have other teams, especially India, defining who we are. Now we are at a point of adversity. We are where we are. That's fine. How you rise up from this, how you respond to the challenge, that defines who you are. Let Pakistan, the players, define who we are, not other people define who we are. They need to have some pride. This is a good team. There are good players here. We are here for a reason. We have expectations for a reason. It's time they show us what those reasons are. बिल्कुल ठीक है। अब मैं, आप जो एक बात आपने की है, मैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। द पॉइंट अबाउट इंडिया बीइंग 60 for 4 एंड देन लिफ्टिंग अ फुट ऑफ द एक्सेलरेटर। और आज हमने जो फाइनल में देखा है कि सिराज वाज ऑन अ रोल, बट इंडिया ने उसको हटाया नहीं। आई मीन दे डिडंट से कि ओके आपके 5 ही आउट हो गए हैं, लेट्स सेव हिम एंड सेव हिम फॉर द लास्ट 10 overs. व्हाट दे डिड वाज लेट्स गो फॉर द किल। नाउ दैट वी हैव देम, लेट्स फिनिश देम ऑफ। और वही हुआ कि 50 रन पे ऑल आउट हो गए, एंड देन ऑब्वियसली इट वाज अ केक वॉक। तो वो थोड़ी, आई थिंक, सेंस ऑफ aggressiveness, a sense of the moments in the game जहाँ पे हमारे पास एक एक हमारे मैच हमारे हाथ में आया होता है, उसको हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से उसको
एक्सिक्यूट करना है, और वंस वी हैव द ऑपोजिशन यू नो बैक अगेंस्ट द कॉर्नर, तो हमें फिनिश ऑफ करना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Just like the Asia Cup final last year, where Sri Lanka was 59 for 5 and we took our feet off the accelerator. Bob, that's one of the drawbacks here is Babra's captaincy. We know it's kind of been exposed. Mudassar can talk more about that. There's so many things, but the bottom line is he is our captain through the World Cup, so we can't change it. But it's sad that he's not learning, and the rest of the world is seeing where we are in that perspective. सही. मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? ओवरऑल डिस्कशन में आपके बिग पिक्चर टेकअवेज क्या हैं? यार पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज. अभी एक हफ्ते पहले का तुम मीडिया देखो सारा, जब इंडियन टीम आ रही थी बांग्लादेश से 2-1 हारी हुई थी, वेस्ट इंडीज से T20 हारी, ओडीआई काफी क्लोज हुई थी, 2-1 था मगर दे वर नॉट प्लेइंग गुड. तो जब नेट प्रैक्टिस हो रही है तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, कोई बैट मांग रहा है बाबर से, कोई क्लिप बना रहा है शाहीन के, तो टोटल पैनिक एंड केओस. जब 60 पे 4 आउट हुए, इंटरप्शन आई, उस वक्त भी पाकिस्तान को वो फेवरेट बोल रहा था पूरा इंडियन मीडिया और हर कोई. उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ है कि 2 हफ्ते बाद अब कोई कह रहा है टीम को निकालो, कैप्टन चेंज करो, फलाने को निकालो. आई थिंक पैनिक बटन बहुत जल्दी पुश किया है. 4 साल से, पिछले वर्ल्ड कप से ये दूसरा वर्ल्ड कप आ गया है, टीम तक काफी प्लेयर जो है वो वही लोग खेल रहे हैं टीम. तो इस वक्त छेड़ना तो बेवकूफी है टीम को. जब इतने 4 साल से यू हैव कंसिस्टेंट प्लेयर, दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेल. अब छोटी छोटी चेंजों से फर्क पड़ता है. ये मुझे नहीं समझ आया फहीम अशरफ आया कहाँ से है ये. वसीम जूनियर स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ का या मिडिल का. वर्ल्ड कप में व्हेन ही गॉट एडेड इन T20 टीम लुक कंप्लीटली डिफरेंट. तो जो आपके पास टीम है ना, यू हैव टू कंटिन्यू द प्लेयर. एक आध चेंजेस आप कर सकते हो फिटनेस पे या किसी प्रॉब्लम पे, वरना दिस इज टू डेंजरस टू मेक टू मेनी चेंजेस. और दे शुड हैव सेल्फ बिलीव के भाई 4 साल सर्वाइव किया, ये प्लेड वर्ल्ड कप फाइनल, दे वर नंबर 1 टीम, तो जस्ट दे नीड टू कैरी ऑन विद कॉन्फिडेंस. अच्छा, चलें, ये जो आपने बात की है इसके बारे में हमारे एक और एपिसोड भी होगा, वेयर वी गोना डेल्व डीपर इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड, और उसमें जो आप अभी बात कर रहे हो कि मोर और लेस वही टीम के साथ जाना चाहिए विद फ्यू चेंज, उसको हम मजीद बात कर लेंगे. बट डोंट यू थिंक कि एक चीज जो बाकी लोगों ने भी हाईलाइट की है कि भाई वी आर टू सॉर्ट ऑफ टॉप हैवी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग रिसोर्सेज, के हमारे फर्स्ट 20 ओवर्स, फर्स्ट 15 ओवर्स विद आवर पेसर्स, especially when Naseem was there, that's the time when we were really dangerous. But once our spinners came in and started bowling, तो वो बड़ा आसान हो रहा था ऑपोजिशन के लिए नेविगेट करना. यार इंडिया के साथ भी वही हुआ. तो bowling resources, spinning resources के अंदर, are you satisfied or do you think we need a specialist bowler like नहीं maybe यार, Abrar वो going forward? टीम का इशू नहीं है, इसके काफी रीजन है. ये एग्जैक्ट चीज मेलबर्न में हुई थी जब ये आपके पास तीसरा पेसर नहीं था. होता ये है कि जो इंडियंस स्पेशली, दे आर बेटर प्लेयर ऑफ स्पिनर्स among all Asian team. Even Sri Lankan batsmen play spin better than us. तो उसमें रिस्क होता है. जो शादाब और नवाज, अगर आप ओवरऑल देखो ना, दे आर कंटेनर्स. वो पहली बात हो चुकी है, दे आर डिसेंट ऑलराउंडर्स. अच्छे दिन पे शायद शादाब 1-2 आउट कर ले. गलती उस वक्त किसी ना टीम की है ना, मेजर गलती थी कैप्टनसी की, जब वो 6 for 4 पे स्लिप नहीं हटानी चाहिए थी, कीप ऑन बॉलिंग. एक विकेट आउट होता, गेम खत्म हो गया था. तो दैट वाज अ ब्लंडर. और हमें पता है गलतियां हैं कैप्टनसी की. देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ. वी आर, कुछ भी है उसकी थोड़ी लक है. ही वाज द फर्स्ट कैप्टन टू बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप. फिर टीम वेंट टू द फाइनल जैसे भी पहुंची. सो ही हैज सम लक राइडिंग, ही इज राइडिंग ऑन लक सो फार. तो हम लोग वी स्टिल होप कि कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे वर्ल्ड कप में. मगर वो जो टीम से ज्यादा ना कैप्टनसी के इश्यूज हैं. अभी मैं एक और मिसाल दूं, श्रीलंका वाले गेम में मुझे कौन सी कोई लॉजिक बताओ कि इफ्तिखार से पहले आपने 2 विकेटें जाया की हैं, नवाज की और हारिस की, जो हारिस तो खेल भी नहीं रहा है. इफ्तिखार उसके बाद कैसे आ रहा है 7वें नंबर पे इन दोनों के बाद? कोई सेंस ही नहीं है. और उससे पता है, उससे आपकी कैलकुलेशन खराब होती है. यू गिव 2 विकेट एक्स्ट्रा, फिर वो कैलकुलेशन में भी आपके पॉइंट सब्ट्रैक्ट होते हैं डीएल में. तो ये सारे टीम से ज्यादा इशू मैनेज कैप्टनसी के थे. होपफुली वी कैन लर्न मोर. और खैर अब हम आगे बात करेंगे कि आगे टीम में एक आध चेंज क्या हो सकती है. मगर ओवरऑल टीम इतनी बुरी नहीं थी जितना लोग बोल रहे हैं. राइट. अनफॉर्चुनेटली, जी जी, आप बता.
Yeah, go ahead, मैं कह रहा हूँ Harsh. जहां तक स्पिनर की बात है, look, we did try Osama in the ODIs against Afghanistan and it didn't really work out very well. um yes, the captaincy की बात है, that's true, but they were both of our spinners, especially Shadab, who is, I disagree with him a little bit here. He is a wicket-taking bowler when he is on song. He's not been on song. I mean, he immediately at 66 for 4, you come in, he was bowling at least one or two bad balls per over. That was a release, a pressure release. Full Chauke, tosses and आराम से, half right? crackers. Yeah, but at the same time, not to belabor this point, Babar also spread the field immediately. Yeah. So if you've got two new batsmen and you're allowing them to get singles and doubles easy, they'll get the eye in. Bring the field in, make the batsmen have to play out of character, have to play a risky shot in order to score. If they do, you tip the hat to them and say, well done. But at least you're making them play a risky shot before they get their eyes in. That's what you have to do. Again, and we may not talk about this later, we may, but just Sri Lanka match. I mean, look, last ball, you need 2 runs. We had 4 fielders in the circle. He was playing for a tie. How do you do that? How do you not bring everybody in? Again, I know we're talking about spinners, and the bottom line is Shadab is your vice captain. He needs to step up, and he has historically been poor right up to these ICC tournaments, and then he stood up. Now, I don't know if that's going to happen again, but we need to have Shadab on song because we need him to be not just a container. We need him to be a wicket-taking bowler. But you need to have a captain who's on the same page as you, who sets the fields that you need and want in order to achieve that. Yeah. अभी आपने लेटेस्ट इवन मॉर्गन ने नाम लेके कहा शादाब को कि he outperforms in tournament. So हर दफा ये होता है शादाब को निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो. But like फखर, शादाब is another player. जब वो क्रंच गेम आता है, जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन जो गेम था T20 में, जिसकी वजह से हम we stayed in the tournament. Shadab came from nowhere और वो उसने क्या बैटिंग की थी उस दिन. तो शादाब है, आई एम अगेंस्ट ड्रॉपिंग शादाब. खैर वो आगे बहुत अलग डिस्कशन है टीम का. एक चीज और ऐड करनी है कि डोंट फॉरगेट अबाउट द लक फैक्टर. कि किस्मत भी खराब थी. मैं तो मजाक करूँ कि हमारी नजर होती है टीम की. यार प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, कुछ हमने कैच छोड़े हैं. फिर जब बारिश के बाद, दिस इज द फर्स्ट ओडीआई फॉर 2 days इन द हिस्ट्री. अजीब मजाक है वो भी हमने ही बेसिकली नेगोशिएट करके अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी. उसमें रऊफ इंजर्ड हो गया. फिर अगेन आपने टीम चेंज की. राणा बहुत अच्छी बैटिंग करता है, उसको 75 रन पड़े उसको. भाई इंडिया के खिलाफ अगर आप 14 पेसर खिलाने हो, इट हैज टू बी 145. वो वसीम खिलाओ आप, चाहे एहसानुल्लाह खिलाओ या जमान को खिलाओ, आप मीडियम पेसर इंडिया के खिलाफ नहीं खिला सकते. और ये तो खराब पिच है. अभी आप फहीम को वर्ल्ड कप में तो लेके जाओ जरा, वहां की जो फ्लैट पिचों पे जो पिटाई होगी उसको 10 ओवर नहीं करा सकते आप उसके. नहीं, अगर तो आप इतने लेट आ रहे हो, 7 डाउन 8 डाउन आ रहे हो, तो वो आपकी बैटिंग की इस बेसिस पे जो बैटिंग कर लेता है, वो तो एक सेंसलेस बात है. जहां 6 बंदों ने नहीं की या 7 बंदों ने नहीं की, वो 8वां बंदा क्या करेगा? कोई फायदा नहीं है आपको. यू कैन नॉट दिस. खैर वो बॉलिंग शुड बी परफेक्ट. अगर कोई आपको 6th ऑप्शन मिल रहा है, जिस तरह शादाब या नवाज करते हैं, तो उनमें से मे बी यू कैन कीप शादाब एंड प्ले fourth pacer against, like a quality fourth pacer against India or Sri Lanka or Bangladesh. These 3 teams can play. Even Afridi used to struggle against them. जब आप दूसरी टीमों से खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका स्पेशली, या अब तो खैर इंग्लैंड भी अच्छा खेलने लगी है स्पिनर्स. खैर वो तो खैर बात का डिस्कशन है. मैं ये कि थोड़ी लक भी थी, हमारी बैड लक रही है एशिया कप में, और थोड़ी कैप्टनसी ब्लंडर थे, मगर ऑल इज नॉट लॉस्ट. अभी lot of चले on that note, because जो आपने कहा all is not lost, let me highlight 2 so pluses जहाँ पे इतना doom and gloom की बातें हो रही हैं. 2 चीजें जो मेरे लिए स्टैंड आउट की, उसके बारे में मैं आपका तबसरा चाहूंगा. एक डिबेट होती थी कि जी रिजवान, रिजवान does रिजवान belong, more than रिजवान belong, is number 4 a good position for him. I think वो उसने स्पेशली लास्ट गेम के अंदर भी, उससे पहले भी, इसने काफी हद तक स्टेबिलिटी भी लेकर आया है. He's had few good knocks, so उसकी फॉर्म विद द बैट एटलीस्ट. आई नो उसने एज कीपिंग के अंदर थोड़े से उसके अंदर मिस्टेक्स हुई थी. लास्ट श्रीलंका गेम के अंदर भी क्रूशल कैच ड्रॉप हुआ, बट ओवरऑल उसकी बैटिंग सीम्स टू हैव इम्प्रूव. तो एक मिडिल ऑर्डर का जो मसला था, दैट्स वो थोड़ा सा हमें कम हो जाएगा. दूसरा, अब्दुल्ला शफीक, वो जिस तरीके से आया, उसको एक ही मौका मिला, लेकिन ही हैज पुट हिज हैंड अप. और जिस तरीके से जो कामनेस लेके आया एट द टॉप, 50 रन की उसने इनिंग खेली. उससे पहले उसका टेस्ट सीरीज भी बड़ी अच्छी गई थी श्रीलंका में, लेकिन वही बात था कि यार टेस्ट सीरीज की बेसिस पे आप उसको वनडे में दोगे कि नहीं. तो ही इज रियली सॉर्ट ऑफ, वो जो हमारे एक ओपनर की एक बात आ रही है
if फखर को हम नहीं लेकर जाते हैं तो we now seem to have at least another good option in अब्दुल्ला शफीक. इन दो के बारे में आप क्या कहोगे? फखर को अगर आपको चेंज करना है, यू नीड टू गेट अ सिमिलर प्लेयर, क्योंकि फखर का एक रोल है आपके, वो रोकने वाले तो बैट्समैन भरे हुए हैं ना आपके पास, वो इमाम है, वो शुक्र कर अब जाके उससे कुछ स्ट्राइक रेट कोई इंसानों वाला हो रहा है फाइनली शुरू इतने में तो सालों नहीं। बाद. It was really bad actually. He was playing with strike rate of 80s or sometime even lower. तो इमाम अब जाके बेहतर हुए, पीछे बाबर है, बाबर is good, चौथे पे रिजवान है, तो बड़ी how you gonna chase 350 320? तो ओपन में you have to take a risk. फखर के अलावा अगर आपको चेंज करना है then you should have played साइम अयूब और हैरी हारिस भी था। हारिस यार, आई डोंट नो, हारिस से अच्छा हसीबुल्ला है, he averages 45. हारिस का तो कोई record ही नहीं है यार. हारिस doesn't even open in domestic. हारिस plays at 5 or 6 और he has zero record except for PSL. तो हसीबुल्ला है, खैर वो तो फ्यूचर है. तो अभी I don't think we have any option. अगर आप पैनिक बटन में खिला लें अब्दुल्ला को, मगर मुझे नहीं पता फिर वो एक्स फैक्टर कहाँ से आएगा टॉप ऑर्डर में. पीछे चले आपका इफ्तिखार है, प्लेयर भी नहीं है ना. तो So अच्छा चलिए, ये फखर की डिबेट तो आई थिंक बाद में, रिक्वायर्स अ होल न्यू I will एपिसोड. answer the question. एक तो नंबर रिजवान की बात है. I think 4 is actually not a bad place for him because we know Rizwan needs to be able to play a few dot balls. And at 4, you can do that in a 50 over match. We know Rizwan can finish a match for us, and he was very close to doing that. He can play a long innings. So I think that's great. You know, Abdullah Shafiq, I can never say anything bad about him. I'm a huge fan of his. He's got wonderful technique, great test batsman. And he, give him credit. He sat there on the sideline the entire time. One match, you throw him in the middle, and he did the job. You cannot criticize him at all. I would say Imam and Abdullah together would be a little slow in the beginning, but they probably would guard their wickets a little better than some of their predecessors. I think Abdullah is definitely someone to keep an eye on and should be part of the Pakistan team in future. Whether it's now or not, we'll talk about that later. I'm never going to say anything bad about Abdullah Shafiq because I think he is absolutely an essential part of our team, our batting in the future, and he's younger than Fakhr. So, but whether that means he opens for us in the World Cup, we'll talk about that later. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा क्या कोई ऐसी बात है जो हमने डिस्कस की? ऑब्वियसली the really sad news and disturbing news coming these days is the possible exclusion of Naseem, उसकी इंजरी. तो ऑब्वियसली ये इसमें तो कोई इट्स अ नो ब्रेनर कि अगर ये चीज होती है तो दैट्स गोना बी अ बिग ब्लो टू पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स. इसके बारे में क्या कहेंगे? ड्यू टू व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? Do we have somebody like him, or that's just a loss we'll just have to do without him? क्या कहेंगे इसके बारे में? Shuru mein, I was thinking again, I was not that upset about the Asia Cup. Perspective is perspective. At the end of the day, we only lost 2 matches. One match we got blown away in. The other match we lost on the final ball. That's not terrible, On the flip side, we're the number 1 team. I don't think we've ever been less deserving of the number 1 title than we are now. So that there's a balance there. The Naseem news is devastating. And he cannot be replaced, but you just do the best that you can. And I will go back and call back, and everyone's going to say I'm being a sentimental Pakistan fan. Right before the 92 World Cup, at his very peak, Waqar Younis could not come. And we also know how that ended up. So what I'm saying is this sad news? Absolutely, it's devastating for us. Does it mean we cannot win the World Cup? No, we will do what we have to do with the players that we have. Hopefully they'll be good enough to get us there. ठीक है जी. इसके साथ ही आई थिंक ओवरऑल हमने बिग पिक्चर बात कर ली. सो ऑब्वियसली कैप्टनसी रिलेटेड इश्यूज हैं, some issues regarding हमारी approach, and again the luck factor. But hopefully we learn, and hopefully हम इन गलतियों को repeat नहीं करेंगे, and we're still optimistic going forward despite जो हमारे अभी recent performance हुई है, and despite the possible loss of Naseem Shah, we're still optimistic that Pakistan team would have a very good showing in the World Cup. तो इसी के साथ इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं. दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी. एक चीज दोबारा आपको रिमाइंड करना है कि प्लीज इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब. Even if you don't like them, subscribe. ठीक है जी. ओके जी. इसके साथ ही आसिफ, मुदस्सिर और साइम की तरफ से अल्लाह हाफिज.